Welcome learners. Today we will begin with the new topic. The topic is capital budgeting. Now, since capital budgeting, I will explain in detail what it is, but before we proceed further, we will just have a look at the things what we have covered so far by my lectures on EMPC Gyan Darshan. So far from January onwards, I have taken 9 classes. The details are given to you. If by chance you could not attend the classes or listen the live session at that time, you can go to the EMPC video channel or YouTube channel, and links are given for your ready reference. You can see those videos. My submission is that just revise the time value of money, because that will be needed in the capital budgeting in the forthcoming lessons. In total, I have devoted 5 lessons, that is 5 hours for the capital budgeting. So, today is the first one, that is why it is named as capital budgeting 1. So, in the month of July, we will have total 5 lessons on capital budgeting, and I will simply request you or submit you, or my solicitation is that keep on the continuity, because continuity makes the topic to understand better. Today is the first lesson on capital budgeting. Next lesson will be on 8th of July on the same channel. Now, let us begin today's lecture on capital budgeting. Now, what capital budgeting is? As you see, there are 2 words, capital and the budgeting. Capital, everyone knows, the monetary resources of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मॉनिटरी रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम कैपिटल बोलते हैं. अब ये कैपिटल या तो ओनर की खुद की कंट्रीब्यूटेड कैपिटल हो सकती है या फिर उन्होंने बोरो की हो सकती है. सो कैपिटल कैन बी एनीथिंग, आइदर ओनर्स कंट्रीब्यूशन और द बोरोड कैपिटल. एंड देन बजटिंग. द नॉर्मल कनोटेशन ऑफ बजटिंग इज दैट वी आर फॉरवर्ड लुकिंग, वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर. बजटिंग में हम करते क्या हैं, हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं. तो अब अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूं, कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या रहता है. कैपिटल बजटिंग मीन्स प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. आप देखते हैं कंपनीज जो हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, या एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर भी है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग दोज थाउजेंड एंड करोर्स ऑफ रुपीज, they always go for the feasibility testing. So, capital budgeting techniques are the techniques to check a particular investment project from the feasibility viewpoint of. Now, feasibility viewpoint क्या होता है? Owner जो है या एंटरप्रेन्योर जो है, ये देखना चाहता है कि अगर मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या वो मुझे इतनी रिटर्न देगा कि मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा. बिकॉज नॉर्मल कनोटेशन क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँ एज ए स्टूडेंट और एज ए लर्नर दैट यू आर गेटिंग अपॉइंटमेंट इन ए कंपनी एंड कंपनी सेज एट योर डिस्पोजल देर आर 100 करोड़ रुपीज, बट एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू जस्टिफाई द यूज ऑफ दोज 100 करोड़ रुपीज. तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 100 करोड़ रुपीज को अगर हम बैंक में भी जमा कराते हैं एज ए बैंक फिक्स डिपॉजिट, कितना % रिटर्न आएगा? हार्डली 5 to 7% डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम. इट मीन्स आपके लिए एक बेंचमार्क बन गया कि 100 करोड़ रुपीज को आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है कि उसका रिटर्न मिनिमम 7% से ज़्यादा तो आए. तो पहला बेंचमार्क क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि जो रिस्क फ्री रिटर्न्स मिल सकती हैं इन्वेस्टमेंट से, उससे ज़्यादा रिटर्न आए. देन सेकेंड बेंचमार्क हम क्या सेट करते हैं कैपिटल बजटिंग में. सपोज कंपनी हैज़ बोरोड द 100 करोड़ रुपीज फ्रॉम ए बैंक on which company is paying before tax interest of 12%, and it means the second benchmark comes that you should earn minimum 12% return on your investment. फिर आप कहेंगे अगर हम 12% ही कमाएंगे और 12% हम ब्याज दे देंगे तो कंपनी के पास क्या बचेगा. तो यहाँ कंपनी का रूल क्या रहता है, कंपनी सेज आई वांट टू अर्न, लेट अस से इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 8% प्रॉफिट ऑन माय इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ देखिए 12% वाज द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कंपनी ने बोरो किया बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, 8% कंपनी मार्जिन रखना चाहती है, तो आपके लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया दैट यस मिनिमम 20% रिटर्न शुड बी देयर फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज हाउ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स will let you know whether a particular investment project
will generate desired return or not, required rate of return or not. तो मैंने आपको क्या बताया, how we set up the required rate of return, your cost of funds plus the margin which you want to earn, both put together become the minimum required rate of return on the investment, MRR, which is called as minimum required rate of return. So, this is how फिजिबिलिटी टेस्टिंग का पहला स्टेप आता है कि आप सेट कीजिए कि आपको रिटर्न कितनी चाहिए. although there are many methods for evaluating a project, investment project, but simple तरीका मैंने जो आपको बताया, if you are doing a business, if you are doing the job, because definitely after completing your MBA degree, either you will start your own business, you will become an entrepreneur, or you will get a job in a good company, then your task will be there finding out the feasibility of the investment proposal. तो एक एंगल मैंने आपको बताया, MRR आपको अचीव करनी होती है, और MRR कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या होता है. ये तो मैंने एक बेसिक बताया. कैपिटल बजटिंग में हम करते क्या है. सपोज एग्जामिनेशन में आपके पास एक छोटा क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग मीन्स ए टेक्निक इन विच financial feasibility of different investment projects, investment proposals is evaluated from different angles. So, financial feasibility का meaning मैंने आपको बता दिया. Then comes what are the steps in the capital budgeting. Now, before proceeding further for the steps, let us have look at the more terminology relating to capital budgeting. What are the areas in which we will apply the capital budgeting decisions? हर एरिया में capital budgeting decision नहीं हो सकता. Because I have told you capital budgeting is applicable for the investment appraisal of different projects. तो ये different projects क्या हो सकते हैं. Simple project can be there that you are already having a company and your company wants to open a new branch. So, one project may be there setting up a new branch. आप देखते हैं बैंक्स की डिफरेंट ब्रांचेज खुलती हैं, कंपनीज की डिफरेंट ब्रांचेज खुलती हैं, तो उस ब्रांच को ओपन करने से पहले कंपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करेगी. टेक्निकल, मार्केट, सोशल फिजिबिलिटी तो होंगी ही होंगी, बट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज आल्सो देयर. एंड माय एरिया बीइंग फ्रॉम द फाइनेंस, और सिंस वी आर स्टडिंग कैपिटल बजटिंग, सो फर्स्ट थिंग कम्स, इफ वी डिसाइड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, देन डेफिनेटली द ब्रांच शुड बी फाइनेंशियली फिजिबल. उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके. प्रोसेस में आपको पूरी बताऊंगा, बट डू कंटिन्यू द लेसन टिल द एंड ऑफ जुलाई. वीकली लेसन्स आएंगे और पूरा पैकेज जो बनेगा विल मेक यू एक्सपर्ट एंड स्मार्ट इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. सो वन आइडिया इज दैट वेयर डू वी यूज द कैपिटल बजटिंग. वी यूज द कैपिटल बजटिंग डेफिनेटली इन सेटिंग अप ए न्यू ब्रांच. देन कम्स इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी. अगर आपकी कंपनी पहले से कुछ काम कर रही है, पुरानी मशीन्स चल रही हैं, पुरानी मशीन को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन जिसको हम बोलते हैं, तो क्या नई मशीन लगाना फाइनेंशियली वायबल होगा या नहीं होगा. टेक्निकली, सोशली, मैकेनिकली वो सारी चीज़ें तो हम चेक करेंगे, बट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी किसके एंगल से चेक होगी, इट विल बी चेक्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ कैपिटल बजटिंग. देन कम्स रिप्लेसमेंट, मैंने आपको बता दिया, इंस्टॉलेशन हो गया. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. वी डेली सी दैट कंपनीज कम इन द मार्केट विद द न्यू प्रोडक्ट्स. कंपनी का एक प्रोडक्ट है, कंपनी दो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ओल्ड प्रोजेक्ट का न्यू वेरिएंट लॉन्च करती है. सो व्हेनेवर ए कंपनी डिसाइड्स टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, डेफिनेटली दे वुड लाइक टू टेस्ट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट. देन कम्स एंट्री इनटू द न्यू मार्केट. टुडे यू सी दैट कंपनीज आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस होराइजन area wise. If they are local business, they are entering into the national level. If it is a national level, then they go to the international or multinational level. Again, financial feasibility is required. Then the lastly it is there automation of the existing system. As you have seen in the past, banks were doing work manually. हमने उनको ऑटोमेट किया. ऑटोमेशन का एंगल भी क्या रहेगा, अगर फाइनेंशियली वायबल है तो हम ऑटोमेट करेंगे, अदरवाइज फ्रॉम फाइनेंस व्यू पॉइंट हम उसको ऑटोमेट नहीं करेंगे. सो दीज आर द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और ओनली देन एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे कैपिटल बजटिंग यूज हो सकती है. नाउ लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, बट दीज आर ओनली एन एग्जांपल्स. So that is the situation in which we use the capital budgeting or apply the capital budgeting techniques. फिर हम आगे देखते हैं
कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के लिए हमें बेनिफिट्स जो प्रोजेक्ट से आएंगे और कॉस्ट विच विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, वी हैव टू क्वांटिफाई दैट कॉस्ट, एंड फॉर क्वांटिफिकेशन पर्पज वी हैव टू एंगल्स. One is the accounting viewpoint and another is the economist's viewpoint. If you talk from the accounting viewpoint, there are two things: accounting profit and cash flow. Both are different. There is a difference between accounting profit and cash flow. My question to you is there, which one is superior? At the end of the class I will tell you which one is superior, but till then keep on thinking accounting profit superior है या cash flow superior है. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या? अकाउंटिंग प्रॉफिट सिंपली मीन्स द प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर इनकम स्टेटमेंट आफ्टर पेइंग ऑल द ड्यूज, ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द टैक्सेस. दैट इज कॉल्ड एज accounting profit. If you read the income statement of a company, you will come to know what was the net profit of a company. If you are going to start a new project, you will be required to estimate the income statement or projected income statement will have to be presented by you. So आप करेंगे क्या? अगर आप आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आपसे कहा जाएगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इन सब का आप प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाइए. और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट का बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन इज नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट. तो हर साल कितना प्रॉफिट आएगा, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट. So that profit is driven from the accounting perspective, but it is not the cash inflow. Why it is not the cash inflow? अब कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि कंपनी को वापस कैश मिलेगा कितना. Now it is not the cash inflow I am saying. Accounting profit has effect of certain other things, and एक सबसे बड़ा इफेक्ट होता है non cash expenses. I hope you are very much clear about what are the cash expenses and what are the non cash expenses. Let me explain to you what are non cash expenses. One example of non cash expense is depreciation. As you know, whatever investment by a company is done in the fixed assets, plant, machinery, building and all that, that does not qualify to be shown as an expense in the income statement straightway. It gets shown to the income statement or it gets charged to the income statement by way of providing the depreciation. Depreciation is a charge on different fixed assets due to their wear and tear on account of use in the business activities. तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपकी कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ का एक प्लांट खरीदा. इट्स एन एग्जांपल, 10 करोड़ भी हो सकता है, 10 ट्रिलियन भी हो सकता है, 10 मिलियन भी हो सकता है. अब आप देखिए 10 लाख रुपीज एंड वी से लाइफ ऑफ दिस प्लांट इज 5 years, एट द एंड ऑफ विच इट्स सेल्वेज वैल्यू और इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 0. You will get nothing at the end of 5th year. It means you simply say that every year we have consumed the plant worth 2 lakh, because 10 lakh you have invested at 0 time, you will be using it for 5 years. So annual depreciation will be 2 lakh. Depreciation may be provided either on straight line method basis or on WDV basis. So prominent methods are straight line and WDV. However, there are many more methods. तो यहाँ मैंने कौन सा मेथड लगाया? स्ट्रेट लाइन मेथड. अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड सब्सिक्वेंटली भी आएगा आपके पास. अभी मैं आपको बता देता हूं. कॉस्ट ऑफ एसेट लेस सेल्वेज वैल्यू अपॉन life of the asset. So in our case, what was the cost of asset? 10 lakh. Life was 5 years and salvage value was 0. It means yearly depreciation will be 2 lakh rupees. Now this 2 lakh rupees will be shown as an expense in the income statement right from the year 1 till the year 5. But think over the situation. आपने जब मशीन खरीदी 0 टाइम पे, प्लांट खरीदा 0 टाइम पे, you paid 10 lakh rupees to the vendor. Now every year you are showing depreciation in the income statement and you get a tax benefit due to that expense. क्या आप ये 2 लाख रुपए हर साल पे कर रहे हैं? नेवर. आप हर साल अब 2 लाख रुपया पे नहीं कर रहे. एंड ये हम क्यों शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में? सो दैट माई टैक्स बर्डन, टैक्स लाइबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड.
इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपने 2 लाख रुपए एक्सपेंस दिखाया, टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट आ गया. सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी वाज 3 लाख रुपीस, वो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया. इसमें जब आप डेप्रीशिएशन जैसा नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस मीन्स एन एक्सपेंस विच इज शोन इन द इनकम स्टेटमेंट बट इट डज नॉट रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो, पैसे देने नहीं पड़ते, तो आप 2 लाख वापिस जोड़ेंगे तो यू विल से माई कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 3 लाख, डेप्रीशिएशन वाज 2 लाख इज 5 लाख रुपीज. इसका मतलब आपको पहले साल में प्रोजेक्ट की हेल्प से 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे. सिमिलरली सेकेंड ईयर, if your profit after tax is let us say 4 lakh rupees, depreciation is 2 lakh, so you will say 4 plus 2 6, your cash inflow will be 6 lakhs. So this is the way we see the differentiation between accounting profit and the cash inflow. So the one treatment is given to the accounting profit. To convert that into cash inflow is simply profit after tax plus all the non cash expenses which were deducted as an expense while arriving at the profit after tax. And one example I have given you, depreciation. Similarly, amortization of intangible and fictitious assets. Intangible asset like goodwill, patents, copyright, ये सारी assets intangible है, इनको भी हम क्या करते हैं, amortize करते हैं. That means cost of those assets is spread across the useful life of those assets. So amortization is a process through which cost of intangible assets is spread across the useful life of the assets, but आप उसके लिए हर साल पेमेंट नहीं करते. So all the kind of amortizations are also added back to the profit after tax to get the cash inflow. So this is the way accounting profit is different from the cash inflow. So in capital budgeting we will be using cash inflow in maximum of the methods. So if I say in total I will be explaining 5 methods, in 4 methods we will be using cash inflow for checking the financial feasibility of the project, and there will be one method in which we will use accounting profit. So this is the way cash inflow and profit after tax are differentiated. So that is the one viewpoint. And now definitely end तक wait करने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं cash inflow is more superior as compared to profit after tax from the viewpoint of capital budgeting, from the viewpoint of capital budgeting. So that is the one angle. लेकिन अब एंगल और भी होते हैं. मैंने आपको कौन सा पर्सपेक्टिव समझाया, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, और यही पर्सपेक्टिव हम यूज करेंगे कैपिटल बजटिंग में. बट थिंक ओवर ए सिचुएशन, आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, उसमें कई बार हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे डिफरेंशिएटेड होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं अकाउंटिंग बेनिफिट से, वो हम देखते हैं. उसके बाद हम चलेंगे कैपिटल बजटिंग पे. सो समटाइम्स इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन यू गेट differentiate between accounting profit and economic benefits or accounting benefits and economic benefits. अब यहाँ देखिए accounting benefits, accounting profits and cash flow मैंने आपको बता दिया. economic benefits क्या होते हैं? and definitely अगर एक accountant को आप कहेंगे, एक finance perspective से आप project evaluate करेंगे, आप हमेशा focus करेंगे accounting profit पे. but if you are evaluating a project from economics angle, social angle, then definitely you will focus on the economic benefits, economic cost and economic profits. तो economic benefits होते क्या हैं? accounting benefits, profits तो मैंने आपको बता दिए. economic benefits को अब हम समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले से यहाँ लिख के भी रखा है. if you are evaluating a project from the angle of economics or from the economy viewpoint, then definitely economic benefits and economic costs are to be considered. Economic benefits and economic costs are to be considered. Now in economic benefits, number one benefit we take social benefits. and just मैं आपको रिमाइंड करवा दूं,
अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक एंगल से इवेल्युएट कर रहे हैं, सोशल एंगल से इवेल्युएट कर रहे हैं, तो कैपिटल बजटिंग नहीं लगाई जाती. सो वी नेवर अप्लाई कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स फॉर ए प्रोजेक्ट विच हैज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम सोशल एंगल और इकोनॉमिक एंगल. जैसे अगर आप देखिए सोशल बेनिफिट का मतलब क्या होगा. सपोज देयर इज ए वन विलेज, इन दैट विलेज देयर इज नो एजुकेशन फैसिलिटी, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, किड्स को, लर्नर्स को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर चल के स्कूल या कॉलेज अटेंड करने जाना पड़ता है. गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, गवर्नमेंट ने किया कि सो एंड सो विलेज में एक न्यू स्कूल खोला जाएगा या न्यू कॉलेज खोला जाएगा. डेफिनेटली ओपनिंग ए न्यू स्कूल और न्यू कॉलेज विल कॉस्ट द गवर्नमेंट, उसके बेनिफिट्स भी आएंगे. तो यहाँ अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे, सपोज वी से स्कूल विल कॉस्ट 3 crore rupees initial investment, building all that infrastructure and then every year running expense will be 1 crore. सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया. न्यू स्कूल खोलने के लिए 3 करोड़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और हर साल 1 करोड़ का एक्सपेंस होगा. ये तो आपकी पॉकेट से लगेंगे. अब आप कहेंगे बेनिफिट्स क्या आएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर द कैश आउटफ्लो. दिस इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो and this is the maintenance cash outflow every year which is being done. टीचर्स की सैलरी है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस एंड ऑल दैट. इकोनॉमिक कॉस्ट भी यही होगी, रादर आई विल से अकाउंटिंग कॉस्ट है ये तो. अब अगर आप इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे तो इसके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या होंगे. सो नंबर 1 सोशल बेनिफिट इज दैट इन द सोसाइटी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू all those who were not previously having education facility in that area. बहुत बड़ा सोशल एंगल है. सिमिलरली और बेनिफिट्स हो सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या होगा, जैसे ही स्कूल खुलेगा आसपास वेंडर्स की दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, बुक्स बेचेंगे, स्टूडेंट्स के लिए कॉफ़ी चाय ये स्नैक्स बेचेंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो सोशल बेनिफिट है. तो सोशल बेनिफिट्स आर द वन विच आर डिराइव्ड बाय द सोसाइटी एज सुन एज यू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट. दो ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स. अब आप आ जाइए, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, वो एक नई कंपनी लगाते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, कंपनीज हैं. अब एक हम चाहे कह दें प्राइवेट स्कूल खुलेगा या हम कह दें प्राइवेट कंपनी लॉन्च होगी, द मोमेंट एंटरप्रेन्योर और एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू ओपन द न्यू बिजनेस, न्यू स्कूल और न्यू कॉलेज, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर का एंगल तो अकाउंटिंग एंगल है, बट गवर्नमेंट किस एंगल से देख रही है, इकोनॉमिक एंगल से. बिकॉज जैसे ही वो स्कूल या कॉलेज खुलेगा या कंपनी खुलेगी, एम्प्लॉयमेंट विल गेट जनरेटेड, पीपल विल हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. आसपास की सोसाइटी ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि आजकल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर पे एक फोर्स वर्क करती है, सोसाइटी की कह लीजिए, गवर्नमेंट की कह लीजिए या रेगुलेटर की कह लीजिए, कि अगर आप एक नई कंपनी किसी एरिया में लगा रहे हैं तो आसपास के एरिया को क्लीन एंड ग्रीन रखना भी आपकी जिम्मेवारी है. सो इट मीन्स जैसे ही वो कंपनी बनेगी, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिला, एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिला, न्यू प्रोडक्ट्स का बेनिफिट मिला, उसके साथ साथ आसपास के एरिया को क्लीन एंड ग्रीन रखने का काम भी वही करेंगे. एंड देन थिंक ऑफ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी देती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी देती हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटी देती हैं. जब वो एडिशनली आएंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सोसाइटी की हेल्थ इंप्रूव होगी. ये सारी चीजें इकोनॉमिक बेनिफिट्स में वर्क करती हैं. सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल इंक्लूड मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल एज intangible benefits from the social perspective, and all those are considered before opening any kind of project by the government or the social organizations. That is number 1. But any project which is launched, apart from having accounting benefits and the cost, उसके सोशल बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन सोशल कॉस्ट भी होगी. ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट के सिर्फ सोशल बेनिफिट होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, सोशल कॉस्ट नहीं होगी. एंड दैट इज वाई वी स्टडी सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इट मीन्स कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उसके सोशल कॉस्ट को भी हम कंसिडर करेंगे, सोशल बेनिफिट्स को भी करेंगे. कैपिटल बजटिंग तो डेफिनेटली फाइनेंशियल एंगल से होगी, लेकिन मैंने आपको बताया हर प्रोजेक्ट में कैपिटल बजटिंग एप्लीकेबल नहीं होती है. अब ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कैपिटल बजटिंग का एंगल नहीं देखा जाएगा?
तो जितने भी प्रोजेक्ट्स सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए लिए जाते हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए लिए जाते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं, कैपिटल बजटिंग नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं? हम करते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल बेनिफिट्स मैंने आपको गिनवाए, सोशल कॉस्ट भी होती है। ओपनिंग ए न्यू स्कूल, ओपनिंग ए न्यू कॉलेज, ओपनिंग ए न्यू कंपनी, डेफिनेटली सोसाइटी को कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी। कॉस्ट नंबर 1, ऐसा हो सकता है पोल्यूशन क्रिएट हो, ऐसा हो सकता है नॉइज पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा, डस्ट पोल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी सिटीज जिनमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन गई हैं, आजकल वहाँ ड्राइव चल रही है कि उनको ग्रीन रखने के लिए कंपनीज पे भी फोर्स है, गवर्नमेंट पे भी फोर्स है कि एरिया को क्लीन एंड ग्रीन रखिए। क्योंकि पहले हमने शायद ना सोचा हो, एक अलग बात है, आज हम ये सोचते हैं कि अगर एक नई कंपनी आएगी तो डेफिनेटली पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट होना चाहिए। तो सोसाइटी को क्या कॉस्ट आई? पोल्यूशन। फिर दूसरी कॉस्ट आएगी कि आसपास के एरिया में लैंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब देखिए, लैंड की कॉस्ट बढ़ने से लैंड ओनर्स जो जिनके पास पहले से लैंड है उनके लिए तो बेनिफिट बन गया, उनकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अब जो उस एरिया में नई लैंड खरीदना चाहता है, हाउस खरीदना चाहता है, उसको हाउस पहले से महंगा मिलेगा। दैट विल बी इनडायरेक्टली कॉस्ट फॉर द सोसाइटी। सो इन दैट वे वी ऑलवेज इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल। वहां पे कैपिटल बजटिंग नहीं लगती। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोगों की या सिटीजन्स की हेल्थ के लिए मुझे हॉस्पिटल चलानी है, तो एक हॉस्पिटल खोलने के लिए मैं कैपिटल बजटिंग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां मेरा फाइनेंशियल एंगल ही नहीं है। स्कूल खोलना है, क्लब खोलना है, किस तरह का क्लब? स्पोर्ट्स क्लब, सो दैट वहाँ के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स सीख सकें, नेशन को रिप्रेजेंट कर सकें नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो उन क्लब्स को खोलने के लिए हम सोशल बेनिफिट ही देखते हैं, सोशल कॉस्ट देखते हैं, हम अकाउंटिंग बेनिफिट या अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं देखेंगे। तो डियर लर्नर्स, मैंने आपको क्या बताया? मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, हाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लो। While evaluating a project, generally a private owner will go for the financial benefits or accounting benefits, and they will definitely apply the methods of capital budgeting. Whereas when government is starting some social projects like school, colleges or recreation centers or health facilities, then definitely they will go for the social cost and the benefits. So in that way, economic cost and benefits and accounting cost and benefits are differentiated. So stay tuned, we will take a break for 2 minutes. After that, I will tell you how capital budgeting techniques are applied for evaluating any kind of new project in which capital budgeting is required. Stay tuned, let us take a break for 2 minutes. Hello and welcome learners. We are excited to tell you that Indira Gandhi National Open University has launched MSc Physics degree in open and distance learning mode from July 2023. The degree is comparable with any MSc Physics degree offered by higher educational institutes across the country. Now let us look at the salient features of the program. The objective of the program is to impart high-quality education in physics, to equip the learners with core knowledge in physics, to provide adequate analytical and laboratory training for pursuing higher education or a career in physics research and development, to provide a focused insight into currently relevant branches of physics research through well-designed elective courses, to prepare students for higher studies in interdisciplinary areas. The minimum duration of the program is 2 years and maximum duration of the program is 4 years. The medium of instruction is English. The program has 4 semesters with a total of 72 credits. We have 17 core courses
and 3 elective courses. The program has 2 admission cycles, July and January cycle. The registration is annual. The term and examination will be held after 1 year of your admission and every 6 months thereafter. The course material will be a blend of self-learning materials and open educational resources. The SLM or the course materials will be available for download on eGyan course and in print form. Now the eligibility criteria for the program are graduate with major or honors in physics, graduate with BSc degree including IGNOU BSc with physics and mathematics, graduate with a BSc degree of IGNOU or any recognized open university with a minimum of 32 credits of physics and mathematics as one of the subject. So if you are a science graduate who want to pursue a master's degree in physics and aspire to be a physics teacher at the high school, college or university level, if you aspire to be a researcher in frontier areas in physics leading to a PhD in physics or as a scientist in national laboratories or industry, if you want to attain professional growth through higher education, then this program is an excellent opportunity for you. For more information, you may write to us at mscph@ignou.ac.in or call us at the given number. Thank you and best wishes. वेलकम बैक लर्नर्स. ब्रेक पे जाने से पहले वी लर्नड अबाउट बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी. नाउ वी कंटिन्यू द सेशन. While applying the capital budgeting technique, what are the different steps to be taken so that we ultimately come to a decision whether project लगाना है या नहीं लगाना? Because financial feasibility simply means, is the project financially viable or not? That means, are we going to accept the project from financial viewpoint or not accept it? So the first step, because logical steps have to be followed. Again my submission is that in an examination question, if you follow all these steps, then definitely you will not miss out anything in the solution and your solution will be perfect. So the first step in the capital budgeting is estimation of cash outflow. Cash outflow means how much investment will be required in the project, and cash outflow can be of different types. As you can see on the slide, cash outflow, there are two incidences timing wise, initial cash outflow and subsequent cash outflow. When I say initial cash outflow means at the 0 time in the beginning of the project, and subsequent means subsequently during the running life of the project. Suppose a project is started today, that is the 0 time. So, we have to estimate how much investment will be needed in that project today, and let us say life of the project is 10 years. तो हो सकता है फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करना पड़े. सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम टाइमिंग वाइज इट कैन बी इनिशियल कैश आउटफ्लो और सब्सिक्वेंट कैश आउटफ्लो. नाउ वेदर इट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो और सब्सिक्वेंट, इट कैन be invested in either fixed assets or working capital. Now, as you know, whenever we launch a new project or a project is there in front of us, definitely certain investment is required in the fixed assets.
land, building, plant, machinery, all the equipments. If we are going to purchase that, then definitely our cash outflow will be there. So, that cash outflow in fixed assets definitely is at 0 time and subsequently can also be there. Now, you might think जब मैंने बिगिनिंग में क्या इन्वेस्ट कर दिया तो सब्सिक्वेंटली फिर एसेट्स में क्यों इन्वेस्ट करना है. सो रीजन मे बी, लेट अस से वी स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट at 0 time, invested 10 crore rupees. At that time, capacity of the project was to produce 5,000 units per annum. Life is 10 years. After 3 years, we are about to reach the maximum capacity utilization, and you think that product has an excellent market demand, then definitely you would like to expand the project, expand the facilities, and at that point of time you need to make more investment in the fixed assets. So, that is how fixed asset investment can either be at initial level, subsequent level, or at both the levels. Similarly, investment in working capital. Now, what is working capital? Although working capital can be viewed from two angles, static viewpoint and dynamic viewpoint. When I say static viewpoint simply means visualizing or interpreting or understanding the working capital from the balance sheet data, the data given in the balance sheet, and simple definition is that net working capital means current assets minus current liabilities. Whereas, from dynamic viewpoint, working capital means requirement of funds for day to day activities. If we have commissioned a project, let us say initial investment in the fixed assets is 10 crore rupees. Now, the moment you start thinking of operating the machines, operating the plant, you need more money for buying the raw material, paying to the labor, electricity, water and routine expenses. So, if you estimate that year on year fixed level of activity will be there, and every year you need 1 crore rupees for that. Now, it does not mean life is 10 years. So, every year you will be investing 1 crore in the working capital, because working capital is rotated through a cycle called as operating cycle. So, at the beginning or at the 0 time you will invest 1 crore, products will be made by using that 1 crore rupees raw material, labor expenses and electricity and all those expenses, and by the end of the year, let us say your operating cycle is 1 year. It means अगर आप आज प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, पूरा साल भर लगता है उस प्रोडक्ट को बना के बेचने में. तो साल भर के एंड में जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट, डेफिनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा में बिकेगा. तो आई एज्यूम आपने 1.4 करोड़ में बेचा, तो 0.4 करोड़ इज योर बेनिफिट और प्रॉफिट, जिस पे आप टैक्स भी देंगे. 1 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट था वर्किंग कैपिटल में. सो यू विल गेट बैक दैट 1 करोड़ एट द एंड ऑफ 1 ईयर. फिर वही 1 करोड़ रुपीज आप सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में फ्लो में डालेंगे, अगेन इट विल कीप इनटू रोटेशन. So, that means your initial investment in the project on account of fixed asset is 10 crore rupees and on account of working capital is 1 crore rupees. तो 0 टाइम पे आपका प्रोजेक्ट में कितना कैश आउटफ्लो लगा? 11 crore rupees. Now, if suppose during all the 10 years operating activities remains constant, there is no change, तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में नहीं करना पड़ेगा. So, there will be no additional investment in the subsequent years on account of working capital if your operating activity remains constant. However, that does not happen every time. Your operating activity might fluctuate, either sales will increase year on year or sometimes it might decrease. Now, with every increase in the sales, definitely you need to buy more raw material, you need to pay more operating expenses, and at that point of time you will have to invest more money in the working capital. So, subsequently when operating scale is increased, operating activities are enhanced, then definitely you need to invest more money in the working capital. So, at that time we will say subsequent investment in working capital. So, this is the way you can see cash outflow means investment in the project, investment may be in the fixed assets or in the working capital or on both, and investment may be either initially. So, definitely initially तो होगा ही होगा. So, initially may be there and subsequently also.
So, step number 1 is there. The moment you get an examination question, identify what are the cash outflow on account of fixed assets and working capital, and note down the timing of that also, because timing is more important when we apply the capital budgeting methods. So, step number 1, estimation of cash outflow, that is investment in the project. Then comes step number 2, estimation of cash inflow, because when we set up a new product or set up a new project, launch a new product, set up a new branch, investment I have told you, but what for we are making investment? We are making investment to earn the profit, and I have already told you there is a difference between accounting profit and the cash inflow. Now, when we say cash inflow, for every project we will estimate two kind of inflow. One will be the operating cash inflow, one will be the operating cash inflow called as regular cash inflow, and another will be the terminal cash inflow. So, simple definition of operating cash inflow is there, which is also called as operating cash flow, operating profit plus depreciation. So, I have written only depreciation because in majority of the examination questions you get depreciation as non cash expenses. However, if there are other non cash expenses like amortization of goodwill, patents and copyrights, that also needs to be considered. So, simple connotation or meaning or definition or formula also you can say of operating cash inflow is profit after tax plus depreciation. And now, apart from getting the operating cash inflow, you will also get terminal cash inflow. Now, as the name suggests, terminal, it means the moment project comes to the termination. If I take the same example of life of project 10 years, it means at the end of 10th year project will be stopped, maybe any reason, but life जो हमने प्लांट लगाया उसकी 10 साल थी, 10 साल के एंड पर आप ओल्ड मशीनरी को बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू विल बी द नंबर 1 in the terminal cash inflow, and then whatever was your money in the flow on account of working capital, that will also come back to you. So, terminal cash inflow will include scrap value or salvage value and the recovery of working capital. Both of these put together will be considered in the terminal cash inflow. Now, I will take you back to the examination question. Sometimes in the examination question salvage value is not given, question is silent about salvage value, then definitely you have to assume salvage value is 0. Sometimes in the examination question method of applying depreciation is not given, then by default we will apply straight line method of depreciation, a method in which same amount of depreciation is provided year after year, and उसका formula मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. Annual depreciation is calculated simply cost of asset, that is fixed assets, minus salvage value divided by life of the asset, you will get annual depreciation to be provided, to be shown as an expense in the income statement. Then question comes, are we given recovery of working capital in the question? Examiner will never give you. Examiner says initial investment in fixed assets was 10 crore rupees and in working capital it was 1 crore rupees, life of the project is 10 years and all those details are given, but nowhere you will find that working capital will get recovered at the end. Examiner will not write it, it is default connotation. By default, the moment project is terminated, you will have to show that 1 crore rupees invested in the working capital as recovery of working capital in the form of terminal cash inflow. So, these two precautions you have to take care. If salvage value is not given, assume that to be 0. Recovery of working capital is by default yes at the end of the life of the projects. So, this is the way cash inflow are calculated. So, step 1 was calculating cash outflow, step 2 calculating cash inflow, both operating cash inflow and terminal cash inflow. Now, question comes, how operating cash inflow is calculated, because it depends upon the length of the question, variety and hardness or toughness or typical questions are there, sometimes level of questions are there, then definitely you must know from where to begin, how operating cash inflow is calculated.
So, I have taken a slide also. So, you can first have a look at the slide how operating cash inflow is calculated. As you can see, and you can take a pic of this one also and or note down this, because this will be very handy in solving all the kind of capital budgeting examinations questions. Now, sales revenue is there. By sales revenue, we mean whatever revenue will be earned by the company by selling the products which are produced by means of the project which we have installed or likely to install. Then less operating cost, which is variable plus fixed, and it will be cash operating cost. By cash operating cost, I mean the cost which is paid in cash. Now, this operating cost basically includes cost right from the beginning of the production, that is right from the day one cost of raw material, labor expenses in the factory, factory administration, manufacturing expenses, selling expenses, distribution expenses, advertising and all that. So, all that cost is called as operating cost. Whereas, there is one another cost, finance cost. Finance cost means cost incurred on procuring the funds, interest on loan, that is called as finance cost. So, finance cost will not be deducted right away. So, from sales revenue first we will deduct cash operating cost, and what we will arrive at? We will arrive at cash operating profit. Now, from the cash operating profit, if you can see on the whiteboard, I have taken the same sketch also. From sales revenue we deduct the cash operating cost, we arrive at EBITDA, that is earning before interest, tax, depreciation and amortization. Now, let me take a hypothetical example also, so that we understand this sketch easily. Sales revenue of a project for one particular year will be 200 crores. So, amount is in crores. Cash operating cost, it will include variable cost and the fixed cost both. Variable cost is the cost which varies with the production, which varies or changes with the production, whereas fixed cost is the one which remains constant without considering the level of production. So, let us say both put together for the first year are 120 crore rupees. We have not shown the depreciation so far. So, what will be my cash operating profit? 80 crore rupees, which is called as EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. Then comes the depreciation. So, let us say your depreciation expense for this particular year is 10 crore rupees. Depreciation is provided on different fixed assets due to their wear and tear and use in the business activities. So, 80 minus 10, you will arrive at 70 as EBIT. EBIT also sometimes you come to know, earning before interest and taxes, earning before interest and taxes. That means, such earnings wherein interest expense has not been deducted and tax has also not been deducted. Now, if money was borrowed, funds were borrowed or capital was borrowed, then definitely on that borrowed capital you have to pay the interest, that is called as interest on borrowings, interest on debenture or interest on loan. So, let us say interest on loan is 15 crore rupees, company had borrowed the capital, 15 crore is the interest for the very first year, the year for which we are estimating this operating cash inflow. So, my earning before tax will be 55 crore rupees, which is also called as profit before tax. Now, on this earning before tax, company has to pay the tax. Let us say tax rate is 30%. So, 30% of 55 crores, you can calculate, it will turn out to be 16.5 crore rupees. 16.5 goes out of that. So, 38.5 will be your earning after tax, also known as profit after tax, profit after tax. So, that is your accounting profit which I was talking earlier also, 38.5 crore rupees. Now, whatever depreciation was deducted earlier, you have to add it back to convert that into operating cash inflow or also known as regular cash inflow. So, if we add back the depreciation, so my depreciation was 10 crore.
So 48.5 crore. So you can see operating profit was 38.5 crore rupees. The moment we add back the depreciation, we get 48.5 crore. So we will say from this particular year or for this particular year, my operating cash inflow is 48.5 crore. And let us assume that year on year same operating activity continues and life is 10 years. I am keeping the same example. So we can say every year operating cash inflow will be 48.5 crore rupees, right from the end of first year till the end of last year. Now one more assumption is there in capital budgeting. Assumption is that whatever operating cash inflow is realized or achieved or received, we can say, is considered to be realized at the end of the year. That is only for the purpose of simplicity. हालांकि सेल्स रोज होती है, एक्सपेंसेस रोज पे होंगे, टैक्स क्वार्टरली पे होगा, कुछ केसेस में मंथली पे होता है, बट यस फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, for the purpose of applying capital budgeting technique, we assume that yes, every cash inflow will arrive at the end of every operating cash inflow will arrive at the end of respective year. So, we can say in this particular project, whatever was the cash outflow we might have estimated, year on year 48.5 crore will be my operating cash inflow. I hope you got the concept. So, simple definition of operating cash inflow is, or formula for operating cash inflow is, profit after tax plus depreciation, that is plus non cash expenses which were deducted while arriving at the profit after tax. अब आप देखिए, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि MBA में हर कोई एडमिशन लेता है, साइंस ग्रेजुएट्स भी लेते हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट्स भी लेते हैं, कॉमर्स वाले भी लेते हैं, मेडिकल स्टूडेंट भी लेते हैं. So, sometimes a problem comes with a learner, the one who is from maths background. It is particular my observation, it is not a fundamental fact, that sometimes the maths background student sees that पहले हमने depreciation घटाया, माइनस किया, अब हम वापस जोड़ रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं क्यों ना शॉर्टकट लगा लूँ, डेप्रिसिएशन पहले नहीं दिखाता, क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि उसको मैथ्स में यही पढ़ाया गया. कुछ लर्नर करते हैं ऐसी गलती, when we evaluate their answer books और when we ask them in the class, वो स्टेट वे कहते हैं कि सर आपने पहले घटाया बाद में जोड़ा तो पहले ना घटाते, बट नेवर डू लाइक दैट, क्योंकि अगर आप पहले नहीं घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, 80 करोड़, EBIT 80 रहेगी, सॉरी उसमें से आप 15 घटाएंगे, so it will become 65. So profit before tax will be 65. Now you have to pay the tax on 65 crore rupees. You have to pay the tax on 65. तो 65 पे टैक्स कितना आएगा, 19.5. यू कैन सी आप अनवांटेडली 3 करोड़ का टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो एक्सपेंस नहीं दिखाया. तो कभी भी ये गलती नहीं करनी कि शॉर्टकट लगा ले, माइनस करेंगे टाइम लगेगा, प्लस करेंगे टाइम लगेगा, और टाइम तो कम है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमेशा टाइम कम होता है. तो आप देखिए, ये शॉर्टकट नहीं लगाना है, आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट. So, this is the way we arrive at operating cash inflow. And then terminal cash inflow, I have already told you, it will include salvage value if it is given in the examination question, yes, calculate the salvage value, and the recovery of working capital. Now, there is one more thing in the salvage value calculation or terminal cash inflow calculation. So, if you see the slide, in the slide I have given you this, also you can keep as a handy screenshot, that salvage value or scrap value, how terminal cash inflow is calculated. So, we have salvage value realized. Let us say the plant is being sold at 10 crore rupees at the end of 10th year. Now, you have to estimate or find out कि उस ओल्ड प्लांट को बेचने में, स्क्रैप बेचने में क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, and how do we identify whether there is a profit in selling the old plant or not. So, for that purpose, simple meaning is that find out whether we have earned the profit on selling the old plant or not, and that you can simply do it like this. Make a comparison between book value of the plant and sales value or scrap value of the plant.
Book value means the value which is given in the books of accounts after providing for the depreciation. So suppose मैं ये कहूं कि आपने 110 करोड़ का प्लांट खरीदा था, ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन आप 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, बिकॉज इन द बिगिनिंग यू एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 10th ईयर सैलवेज वैल्यू विल बी 10 करोड़. अब आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 10 करोड़, क्योंकि आपने पिछले 10 साल में 100 करोड़ रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा दिया. Book value is 10 crore, and if you are selling it for 10 crore, there is no profit or loss on sales. However, if your sales value is, let us say, 12 crore, which is greater than the book value, we will say you have earned a profit of 2 crore, और गवर्नमेंट कहेगी उस 2 करोड़ रुपए पे आप टैक्स दे दीजिए. और अगर आपका सेल्स वैल्यू मान लो 8 करोड़ रुपीज है, सेल्स वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, गवर्नमेंट विल से यू हैव इनकर्ड ए लॉस ऑन द सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, आप उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. तो अब आप देख सकते हैं वापस से स्लाइड को, वट एवर स्क्रैप वैल्यू यू रियलाइज, यू विल डिडक्ट टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट इफ इट इज देयर. अगर गेन नहीं है, लॉस है, तो लॉस पे आपको टैक्स की बचत होती है, टैक्स शील्ड होती है, वो आप ऐड करेंगे एंड यू विल अराइव एट आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, and then add up the recovery of working capital, that will become terminal cash inflow. So dear learners, this is the way we calculate different cash outflow and cash inflow. So always take the steps correctly, estimate cash outflow, estimate cash inflow. Once you have done these two steps, then we will go for the application of capital budgeting methods. There are variety of capital budgeting methods. I will be teaching you, I will be explaining you in total 5 methods, and the methods are something like this. So you can see on the slide, there are different investment appraisal methods, also the capital budgeting methods, non discounted cash flow methods and discounted cash flow methods. So these 5 methods we will be learning. So wait for the next class, it will be on 8th of July, and then we will start with the first thing, non discounted cash flow methods, and then discounted cash flow methods. I will explain everything with the help of an example, numerical example. So that is the way we will be covering this topic. I hope you have understood the concept. Keep on learning. Thanks a lot for giving me your time. Thank you.